In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. Today we will start class 9th subject maths. Review exercise 11 parallelogram and triangles. Question number 3 and 4 yesterday we have done and we have already discussed the parallelograms. Now in this lecture we will do question number 5. Find MN if LMNP is a parallelogram. Now first of all we will recall the properties of parallelogram. You know that is angle L, that is angle N. Both angles are opposite to each other. So its first property is opposite angles are congruent. Congruent means same shape, same size, equal. So L equals to angle N. Now second property of parallelogram, four sides L, M, M, N, N, P and PL. Parallelogram having four sides. So LP and MN both are parallel and congruent to each other. Its property is that opposite sides are congruent. So LM and its opposite side is PN. So LM congruent to PN. So you can solve question. Right here first of all, measurement LP equals to measurement capital MN bar. Put the value of LP 4M plus N. Put the value of Mn 10. So that is equation number 1. Now second LM side. So you can write here measurement LM equals to its opposite side is Pn. Measurement Pn. Same property you will use here. Opposite sides are congruent here, which is mentioned on this part here. Sides are congruent. So LM equals to 8M minus 4N equals to 8. That is known as equation number 2. So basically you are going to find the value of M and N, but you have to get two equations. So how you can find the value of M and? Check that the coefficient of M in first equation having 4, which I have circled with pink color. The coefficient of M in equation number 2 having 8. Both coefficients are different. So first of all you have to apply here the method of equating the coefficient. So it will be 4, so you have to make 8. So equation 1 multiply by 2 on both sides. We get, so 2 into 4M plus N equals to 10. Multiply 2 4 the 8M plus 2N equals to 20. So you have to get new equation. Its name is equation number 3. Now check that equation number 2 and equation number 3 having the same coefficient of M. So let's see its sign. 8M having positive sign and 8M having also positive sign. So you have, if you have to having the same signs, so you have to subtract. अगर इसके कोफिशिएंट के साइंस सेम नहीं थे तो फिर हमने इसको ऐड करना था. ठीक है, आप 4n और यहाँ से 2n का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं. अगर आपने n का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था. ठीक हो गया इस इक्वेशन को, या 4 से. ये इक्वेशन को, ये 4 है. ठीक है, अगर आप n के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो आप इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने 2 से कर दी. नाउ यू कैन राइट हेयर बाय सब्ट्रैक्टिंग. क्योंकि m के कोफिशिएंट्स की साइन सेम है इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3. So you have to subtract here. Sign will be changed here. This is plus becomes minus. That is plus becomes minus. That is plus becomes minus. Plus that is minus. So that will be cancelled.
Now you have to get here minus 6n equals to minus 12. Biggest number having the sign of minus, so n equals to minus 12 by minus 6. So you have to get value, minus sign cancel with minus, so you have to get n equals to 2. Now you are going to find the value of m, so put n equals to 2 in equation number 1. So equation number 1 here, 4m plus n equals to 10. So put the value of n here, 2 equals to 10, implies that 4m equals to 10 minus 2. So 4m equals to 8 and m equals to 8 by 4. So implies that its answer equals to m equals to 2. M and n having same answer, equals to 2. Now next we will start question number 6. Question number 6 you have to do with the help of previous question which is solved. Now in the question number 5, sum of opposite angles of parallelogram is 110 degree. Find the remaining angles. So लेट्स सी, मैंने आपके लिए ये डायग्राम इधर बना ली है, ठीक है, क्योंकि वो डायग्राम प्रीवियस पेज में थी तो मैंने इसको यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब वो देखें वो क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 110 डिग्री। इसका अपोजिट एंगल 55 और इसके सामने जो है एंगल वो 55। इन दोनों का सम 55 प्लस 55 110 है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करें। अब रिमेनिंग एंगल्स में कौन कौन से हैं, पी एंड एम, ठीक है। अब पी ऑपोजिट टू एम, लेकिन ये दोनों अननोन है। फिर यू विल टेक हेल्प फ्रॉम नेबर एंगल, पी हैविंग नेबर एंगल एल और एन। पी का नेबर एंगल या तो एल है या एन है, दोनों में से किसी एक में से वो हेल्प लेगा, ठीक है। तो सो यू कैन राइट हियर एंगल पी प्लस एंगल एल equals to 180 degree. Its property here will be used. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है कि नेबर एंगल होना, जुड़ा हुआ होना, ठीक है। सो राइट इट्स रीजन, इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं सिर्फ ऑरली बता रही हूँ कि यहाँ पे 3 डॉट लगा के यू विल राइट हियर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन दोनों में से कोई एक रीज़न आप लिखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल एल, एंगल पी एज इट इज़ प्लस एंगल एल 55 डिग्री equals to 180 degree. Now 55 shift to other side, then it become minus. So you have to subtract from 180 125 degree. It means this angle equals to 125 degree you have to find. Now you have to find M angle. M is opposite to P angle. So angle P equals to angle M. Its reason is opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. Congruent mean equal. Now angle P here 125 degree, so angle M also equals to 125 degree. So that angle you have to also find. So angle L you have already find. So angle L 55, angle you can write here 55 degree. Angle N equals to 55 degree. Angle P equals to 125 degree and angle M equals to 125 degree. ये आप रिमेनिंग एंगल फाइंड कर चुके हैं। I hope so you have to understand review exercise 11 question number 5 and 6. So these questions are important for the point of view of short questions. So first of all subscribe my channel and also like my videos and share with your friends, and also click on bell icon so that you have to get new updates about my new videos. So Allah Hafiz.